Good afternoon, students. Today we will discuss how to plot a graph in Scilab. To plot a graph in Scilab, first create a vector of x values and then create a vector of y values and then plot x and y. First, x is equal to 0 colon 0.1 colon 30. So you define a vector of x values, then put semicolon and enter. Then you define y. Y is equal to sine of x and then put semicolon, enter. In first you define a vector of x values, then you define y, which is function of x, and then you plot x and y. X comma y, put semicolon and then enter. You get a graph in figure window. Then minimize this figure window and define again y is equal to sqrt, square root of x, then put semicolon and enter. Then plot plot x and y, x comma y semicolon. First function means x is equal to 0 colon 0.1 colon 30. This is plot is on the x-axis and y is equal to sine x. First plot is this, and when you write y is equal to sqrt of x, a square root of x, then plot. This is the plot for square root of x. These are the two plots. Minimize this figure window and suppose you want to erase the old plots, then you write CLF. Clear the figure window and then semicolon, enter. Y is equal to F. This is console and this is figure window. Then open this figure window. This figure window is clear by command CLF. Then y is equal to sine of x and then plot x and y, x comma y you get the plot between x and y. Suppose first you clear the screen, CLC, clear the screen, then you define x is equal to 0 colon 0.1 colon
30 semicolon, enter. Then y1 is equal to sine of x, y2 is equal to cos of x, cos of x, semicolon, enter. This I put this semicolon here, so we get an error. y2 y2 is equal to cos x, enter. Then y3 is equal to sqrt of x, enter. Then plot all the three. First you plot x comma y1, then comma x comma y2 comma x comma y3, enter. You get all the three plots in the same figure window. So plotting these graphs, we will learn how to define x, how to define y or function, how to plot, and how to change the color of graph, or how to change line style, and how to label the axis, and how to give title of the graph. Then we draw multiple line plots. First I clear this screen, CLC, clear the console, and then x is equal to lim space 0 comma percentage pi, comma 21. Pi is written in Scilab as percentage pi. Then enter. Here we define x as this, then we define y. Y is equal to sine of 2 star x plus 1, enter. Then you write SCF 1 SCF means set current figure. Set
current figure window, so it sets the current figure window and minimize this figure window. Then you plot x comma y comma apostrophe o. O, this is for line style. So o, then dash, then b for color, and then put apostrophe and this enter and see the figure window. There are two figure window, but you write SCF1 means set the current figure window 1. So you get the plot of y is equal to sine 2x plus 1 in this graph, and in this graph 0. This is O. This O is shown in this graph, B for blue, and this is the dash. So this part is for line style. Then plot LO, we plot x comma 0.5 star y comma apostrophe caret dash dash and k for black apostrophe, and then put semicolon and enter. You get a graph and line style is changed. This 0 is converted into caret sign and blue line is changed into black. Then plot x comma sqrt then g for green, and if you see this is the third plot. Neil, hello, विकास, हेलो यस मैम हाँ समझ में आ रहा है? यस मैम ठीक है, ओके. But there is no label of sign, or here there is no title. So to label the x-axis, we write x label and put apostrophe, then x space axis, put apostrophe and then semicolon, enter. X-axis is labeled by x-axis. Then you label y-axis, y
put apostrophe, then dollar sign, space, y of x, y of x, then space, comma, slash, comma, 0.5 y, space, comma, slash, हेलो हेलो हेलो, मैम। हाँ, हेलो मैम, हमें कैसे पता पड़ेगा ये इनपुट हमें यही इनपुट करवाना है, इससे ये आउटपुट मिलेगा? क्या चीज़? मैडम, हमें कैसे पता पड़ेगा ये इनपुट हमें यही वाला करवाना पड़ेगा जब आउटपुट ये वाला मिलेगा सर? मैम, क्या है इसमें इनपुट और क्या है इसमें आउटपुट? हाँ मैम, जैसे हमें आउटपुट में साइन का ग्राफ चाहिए मैम। हम्म, तो ये मैम है ना हमें कैसे तुम्हारा, मैं ये तुम्हें मैंने बताया ना, इस पे लिन स्पेस, दिस इज फर्स्ट। तो मैम ये सब हमें याद करना पड़ेगा मतलब इनपुट के लिए मैम? तुमने फर्स्ट जो है याद किया था, तुमने फर्स्ट जो है मेरी लेक्चर अटेंड की थी? मैम फर्स्ट लेक्चर में मेरे को ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी, तो मैंने रीजॉइन किया था, तो मैम आपने मुझे अंदर ही नहीं लिया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी मैम मेरी। तो फिर वो तुम्हारी उस पे देखो, यूट्यूब पे पड़ी है मेरी ओके वीडियो। मैम, मैं उसको देख लूंगा। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। पहले तुमने x को डिफाइन किया, x एक्सिस पे ये प्लॉट हो गया, y है, y इज इक्वल टू साइन 2x+1। फंक्शन यस मैम। डिफाइन किया, दिस y डिपेंड्स अपॉन x, y this y is plotted on y axis, this x is plotted on x axis, this is the starting element, this is the last element। यस मैम। एंड प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज x एंड y, तो यस प्लॉट मैम। x कॉमा y। इसमें क्या याद करने वाली चीज है बताओ पहले, फिर आगे बढ़ूँ मैं। नहीं मैम, जैसे आपने आगे भी ये हाँ, प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, जैसे प्लॉट नीचे एक्स 0.5 इंटू वाई। अरे तो यहाँ पे मैंने ये दिया ना, इसको 3 प्लॉट्स यहाँ पे दिए। यस मैम। एक मिनट, फर्स्ट प्लॉट है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, फर्स्ट प्लॉट क्या है? एक्स एंड वाई। वाई। सेकंड प्लॉट है एक्स एंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाई वाई। वाई, यस मैम। ठीक है, दिस इज यस द प्लॉट फॉर सेकंड। एंड नेक्स्ट प्लॉट है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई, थर्ड प्लॉट। इसमें x डिफाइन करना है, y डिफाइन करना है और इसमें प्लॉट कर देना है। यस मैम। यस। समझ में आया? यस मैम। ये तुमने x जो है फर्स्ट डिफाइन किया, x यस। y, इसको फर्स्ट प्लॉट में x और y प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट में क्या है? x और इस y में, इस y में मल्टीप्लाई हो गया 0.5। यस मैम। अब क्लियर? यस मैम। ओके। ओके, मैं लिया 0.5 SQRT Y and then apostrophe, comma, apostrophe, font size FONTSIZ, font size, apostrophe, comma, and then write 4,
y is labeled in by the command y label, means yx comma 0.5 y and under root y, all these are labeled in on y axis by giving this command, means y label फिर apostrophe dollar y of x, ये है y लेबल को लेबल करने के लिए, y एक्सेस को लेबल करने के लिए कमांड। नील, हेलो नील, मैम। हाँ यस मैम। समझ में आया x एक्सिस और y एक्सिस को कैसे लेबल कर रहे हैं? यस मैम। ओके, देन गिव द टाइटल ऑफ दिस फिगर। Suppose we want to give title of this figure as a function or plotting of function. And plotting of functions. Title is given simply by title, then put the apostrophe and then write down the title of the graph and close this by apostrophe and close the bracket. Then last one is legend. Same as in case of first, this is for first, then put apostrophe, dollar sign, space, 0.5 y, space, this, and in label or in legend I am not using star sign because I am in labeling or in legend there is no need of putting star sign because it is only for labeling. So then put comma and for next Q R T. This is for first function, for second function and for third function, and enter invalid. Let me undefined variable. क्या गड़बड़ है? यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है।
यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, LEGENT किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वी गेट एन एरर अनडिफाइंड वेरिएबल बिकॉज दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड इन साइनलैब. This legend is shown for first legend, second and third. Then CLF, sorry, figure CLC फिगर विंडो क्लियर हो गई बिकॉज मैंने CLF जो है कमांड लिखी. In this video you are only, we will discuss only how to change color, how to change line style, how to label x-axis, y-axis, and how to give title of the graph. X is equal to 0 semicolon 0.01 semicolon 2 star percentage pi. Percentage pi means simply pi, but in Scilab we write pi as percentage pi, and then close square bracket, put semicolon and enter. We define the a vector of x values, means x is equal to starting point is this, increment is this, and last term is 2 pi. Then define function. Function is y is equal to sine n of x, and then put semicolon, enter. Z is equal to cos x, enter. Then plot, plot, प्लॉट क्या करना है, एक्स वाई, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा एपोस्ट्रोफी लाइन विथ एपोस्ट्रोफी कॉमा 3 line style is changed. If you write line width and comma 3, then you get like a graph like this. Similarly, if you plot x and z in this plot, if you want to plot x and z, then write x and z, x comma z comma apostrophe r, r for color, red color,
then comma, apostrophe, line width, apostrophe, and then comma, 3. Cos and in this or this plot we write R is for red, blue is by default, but if we want to change the color of plot, here we can write R or G or K, then there is a change in color. Then here if we write X grid, this grid is shown in the figure window. Then you can label X label, X or then you get label of x-axis. Either one apostrophe, you can use one apostrophe or double apostrophe. Then y label, in you use only single apostrophe, then sign of x, comma, cos of x, only use apostrophe here, apostrophe here. Here, then comma and 3, error in bar, y. Error property. Because here sin x and cos x. Here we use 3, which is wrong, and here we use these inverted commas. So we get error in this plot. Then last one is reason
Difference between x y label and legend. When we write here 3, this is the position of legend, and so we get a wrong, when we write this in y label we get a wrong result. But when we write this is the position of legend, and if we put semicolon and then enter, you get position of legend. This is a graph for sin x and this is the graph for cos x, and this position is changed to the first, second and third position. Neil, hello, Neil, विकास, हेलो। क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे जो है मैं स्टार्ट करा दूंगी फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि तुम्हारा एरे ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन और प्लॉटिंग कैसे होती है ये जो है तुम्हें आइडिया हो गया। क्लियर? नाउ टाइम इज ओवर, सो class is over. Thank you.